चुका है, ठीक है। आंकड़े बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन वो 1.5 लाख में से बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो दुनिया को अभी मार्गदर्शन दे रहा है। आपने डीप सीक का बात किया, देखिए $6 मिलियन में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि चाइना से कोई भी आंकड़ा आता है वो सही नहीं रहता है। वो $6 मिलियन में शायद नहीं हुआ होगा। चाइना डीप सीक को एक प्रोपेगेंडा टूल के हिसाब से अभी इस्तेमाल करने लगा है। कल ही मैंने उसमें एक सवाल किया था कि अरुणाचल प्रदेश इस द राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, तो उसमें आंसर आया, पहले 3 दिन पहले मैंने किया था तो आंसर आया कि दिस क्वेश्चन आस्क सम अदर क्वेश्चन, और कल आया कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ चाइना। तो ये डीपसीक है, ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का टूल है। लेकिन कल अश्विनी जी ने जो कहा कि 1 साल के अंदर हमारी खुद की एआई मॉडल्स बन जाएंगी, ये बहुत ही हम लोग के लिए आशा का किरण लेके आ रहा है। और एआई मिशन में 10,000 करोड़, क्वांटम मिशन में, नेशनल क्वांटम मिशन का पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया था। तो मैं बहुत ही आशावादी हूँ। और स्टार्टअप्स पे जो फोकस है अभी, स्टार्टअप्स पे जो फोकस है, और कल आपको ध्यान होगा, कल 18,300 जीपीयूज का कल वित्त अश्विनी जी ने कल इसका कल अनाउंसमेंट किया है। उससे क्या होगा, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि खुद जाके जीपीयू में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करे और रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल करे। तो ये एक कॉमन पूल बन गया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ये कॉमन पूल बन गया, जिससे हमारे स्टार्टअप्स को बहुत ही अभी आगे सहायता मिलेगी। और मैं बहुत ही आशावादी हूँ कि आगे चल के हम लोग डीप सीक से भी आगे और उससे भी पावरफुल हम लोग एआई टूल्स बनाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीदें टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर बड़ी है। प्रोफेसर अग्रवाल, एक मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, निवेश को लेकर आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि निवेश का जो स्तर है वो मौजूदा 31%, जो कि जीडीपी के अनुपात में 31% है, उसे बढ़ाकर 35% करना है हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर आपको किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं, या क्या आपको लग रहा है कि कुछ पॉलिसी लेवल में चेंजेस की भी जरूरत है? बजट में क्या दिखेगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है इस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच भी है। मल्टी सेक्टोरल के साथ साथ ये डोमेस्टिक और ग्लोबल अप्रोच लेकर के चलना होगा, क्योंकि एक निर्धारित लेवल के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें कई जो है उपयुक्त वातावरण तैयार करना पड़ता है, जो एक बजट में संभव नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमने क्या किया है, बैंकों में जो हमारी इनएफिशिएंसी थी उसको बहुत तेजी से घटा दिया एनपीए की फॉर्म में। दूसरा अगर देखते हैं तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से इस वर्ष बढ़ा है। आगे इसी प्रक्रिया को और बढ़ाने की तैयारी है। आप चाहे आईपीओ के माध्यम से देखें, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से देखें, तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तीसरा आप देखते हैं हम डिमांड जनरेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है आज भारत बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़ पा रहा है। निवेश के साथ साथ भारत ही एक ऐसा बड़ा राष्ट्र है जो अपने यहाँ डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट कर पा रहा है। चाइना इसमें फेल हो गया है, यही कारण है कि उसकी इकोनॉमी 4% के ऊपर नहीं जा पा रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी। हमारे यहाँ अभी भी बहुत से अनटैप्ड पोटेंशियलिटीज हैं। फिर आप देखेंगे कि ग्लोबल माहौल क्या है। ग्लोबल माहौल में इस समय यूरोप, अमेरिका, चाइना, इन बड़ी कंट्रीज में बहुत अच्छे वातावरण नहीं है आर्थिक रूप से, और चाइना के प्रतिकूल एक विश्व का आर्थिक वातावरण बन रहा है। ये भारत के लिए एक उपयुक्त वातावरण, क्योंकि हमारा जो घरेलू वातावरण है आर्थिक रूप से, अन्य रूप से भी देखते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव होता। मैं इसका एक बड़ा अच्छा चित्रण देता हूं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। अभी एक बैठक हुई davos में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और वहां पर आप देखेंगे तो हमारे 8 राज्य गए थे। उन 8 राज्य में केरल था, तमिलनाडु था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक था। कर्नाटक साथ में नहीं आया, बाकी सभी राज्य मिलजुल करके davos में काम कर रहे थे। केवल 2 पवेलियन में 6 राज्य थे, जिसमें रूलिंग पार्टी के वाले राज्य भी थे और जो अपोजिशन वाले थे, और सब अपने अपने राज्यों के लिए निवेश आकर्षित कर रहे थे। यानी कि राज्यों को भी प्रेरित किया गया और ग्लोबल लेवल पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में आज के दिन जो राज्य हैं, पॉलिटिकली कुछ भी हो लेकिन इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा
इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। इसमें सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं। सुजीत जी, सबने अपने अपने पॉजिटिव्स बताए हैं। दूसरा बात है कि डोमेस्टिक पे हम कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें देखिए बड़ा फाइन ट्यून बैलेंसिंग करनी है यहाँ पर। एक तो हमें डिमांड को बढ़ाने के लिए खर्च भी बढ़ाना है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा रियल जो बूस्ट आ रहा है वो आ रहा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, और इस बार ये बढ़ता हुआ नजर आया, लगभग 62% के आसपास हुआ है हमारा, जो अब तक का पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक रहा है और लगातार पिछले 3-4 वर्षों से ये बढ़ रहा है। तो ये हमारे निवेश को आकर्षित कर रहा है। और अगर आप राज्यों के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य जो 40 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अब निवेश भारत में आकर्षित हो रहा है। फिर हम नई टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी हम बड़े निवेश के लिए बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पादन लागत को हम बहुत तेजी से कम कर रहे हैं, और पूरा प्रयास आप देखेंगे पूरे इकोसिस्टम में पीएलआई की बात आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात आई, वो भी क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और जो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इफिशियंसी को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल जो फ्लो होगा इन्वेस्टमेंट का वो किधर होगा? वो वहां पर होगा जहां पर इफिशियंसी और डिमांड होगा। तो ये कई पैरामीटर जोड़ करके हम देखते हैं तो बहुत तेजी के साथ लेकिन ग्रेजुअल फॉर्म में हम इस ओर अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, यहाँ पर सुजीत जी बात की है कि खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो भी उसका लाभ सीधे तौर पर आर्थिक रूप से देश को होता है। हमने ये देखा कि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था, लोगों की आय में वृद्धि हुई थी और उसका जो है सकारात्मक असर जो है इकोनॉमी पर हुआ था। 8th पे कमीशन को जो है वो पास कर दिया गया है। क्या उसका रिफ्लेक्शन हमारी आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये 6%, 6.4% जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है? लोगों के हाथ उन लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है। आज 34 लाख करोड़ जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों के पास पहुंच चुका है, 34 लाख करोड़। और जब मैंने 5 आज करोड़ आदिवासी भाई बहनों के पास आज 80,000 करोड़ रुपया अभी पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था। तो ये सब जब लोगों के पास पहुंच रहा है, ठीक है। आप टैक्स का बात कर रहे हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि टैक्स रेट कम घटाना चाहिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा पैसा हाथ में आना चाहिए। ये तो ठीक है, मैंने कहा 3 करोड़ लोग ही सिर्फ टैक्स रिटर्न 7.5 करोड़ रुपए टैक्स रिटर्न करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से 3 करोड़ टैक्स भरते हैं। तो लोगों के पास जो वेलफेयर स्कीम्स पहुंच रहे हैं, अब 3 लाख ड्रोन दीदी की, लखपति दीदी का बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति का बात, आज 1 लाख ड्रोन दीदी। तो ये जब लखपति दीदी 3 लाख बनेंगी तो ये 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, तो ये खर्च तो देश में ही होगा और ये देश की अर्थव्यवस्था को ही बढ़ाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें जो कंजम्पशन इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जैसे 11 लाख करोड़ पिछले बार इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्लान किया गया था, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। 11 लाख करोड़ जब इतने रोड बनेंगे, इतने हाईवेज बनेंगे, इतने ब्रिजेस बनेंगे, उसमें इतने सारी नौकरियां पैदा होंगी, इतने सारे इकोनॉमिक विलेज इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगा, तो ये सब चीज फिर आगे चल के हमारी जो अर्थव्यवस्था इसको स्ट्रॉन्ग करेगी। जी हाँ। और सुधीर जी, जल्दी से अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्रीकल्चर की अगर बात करें, तो हम जानते हैं कि लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस है, बड़े रिफॉर्म्स लेकर सरकार लगातार आ रही है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर किस तरह की उम्मीद है? और महिलाओं का जिक्र जिस तरह से अभी किया है सुजीत जी ने, 3 लाख करोड़ रुपए पिछली बार महिलाओं के कहीं ना कहीं खाते में गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली योजनाओं के जरिए। तो ऐसे में महिलाओं को लेकर भी क्या उम्मीद? नहीं, देखिए, भारत का रीढ़ है एग्रीकल्चर, आज भी 62% पॉपुलेशन उस पर खड़ा है, तो उसको तो फोकस किया ही है 10 सालों में। एमएसपी की वृद्धि इंगित करती है, फर्टिलाइजर सेक्टर में सब्सिडी इस बात को इंगित करती है, पीएम किसान योजना के तहत एक साथ एक मुश्त किसानों को, करोड़ों किसानों को पेमेंट, ये भी इंगित करती है। ड्रोन दीदी से लेकर बैंक सखी से लेकर पशु सखी से लेकर कृषि सखी,
ये सेल्फ हेल्प ग्रुपों का बड़ा विशाल नेटवर्क खड़ा करना, ये भी इस बात को इंगित करता है। मेन फोकस अभी सहकारिता पर आ गया, कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ये वर्ष तो अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ईयर ही है। इसमें माननीय अमित शाह जी ने 8 लाख ऐसी सहकारी सोसाइटियों को, पैक्स को और मूल धारा में लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी जो भारत की प्रगति का बहुत बड़ा आधार इन सालों में बनने वाला, वो सहकारी सेक्टर से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं, जो अपनी आमदनी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर पेट्रोल पंप तक, वेयर हाउसिंग से लेकर सारी सर्विसेज अब कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। तो भारतीय इकोनॉमी का आधार जो किसान रहा है, किसानों को मजबूत करने के लिए नीचे बेस लाइन पर विश्वकर्मा योजना है। आज अभी मुद्रा बैंकिंग में 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर जो गांव-गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके डेवलपमेंट्स के सारे काम खड़े किए हैं। डिजिटलीकरण हुआ है, तो पानी पता सा बेचने वाला भी अपनी बैंकिंग फैसिलिटी को पा रहा है। इतना इजी हो गया है। तो मैं समझता हूँ महिला सेक्टर में तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। नारी बंधन अधिनियम इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम बहुत तेजी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो जब महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व आएगा, तो आर्थिक उन्नति के सेक्टर में भी उनको फोकस एरिया में लाकर खड़ा किया है। आज आप देखिए, बहन अब हवाई जहाज उड़ाती है, बहन अब मिलिट्री स्कूलों में एडमिशन ले रही है, लड़कियां अब आपकी ऐसी सारी सर्विसेज में, यानी कॉरपोरेट जगत में तो डायरेक्टर ही नहीं बनती थी, इन 10 सालों में तो अब कॉरपोरेट जगत को भी लीड कर रही वो। तो नीचे आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक महिलाओं की एक बड़ी भूमिका कंट्री ने अपने आप को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी तो अब रक्षा मंत्रालय के उसमें होकर भारत में सैनिक विमान उड़ाती है और राफेल उड़ाती है। तो ये कहाँ पहुंच गया देश इन 10 सालों में। तो मैं समझता हूं कि उस सेक्टर को भी अछूता नहीं रखा और बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। सुजीत जी, बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र से भी रिटर्न मिल रहा है। कोरोना काल में जब वैश्विक चुनौतियां सामने खड़ी थी, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, या फिर कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बचाई वो कृषि क्षेत्र ने। और दूसरा, जो डिमांड की बात की जा रही है वो शहरी क्षेत्रों में के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बड़ी है, उसका भी लाभ सीधे तौर पर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में फ्रीबी कल्चर नहीं होनी चाहिए, और मैं ये फ्रीबी और वेलफेयर में एक जो डिफरेंस है उसका जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे सुधीर भाई ने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि स्कीम, 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जब प्रधानमंत्री जी स्वनिधि स्कीम के तहत उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था में वो शामिल होता है। जब किसानों को एमएसपी मिलती है, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत उनको सपोर्ट मिलती है, जब इरिगेशन पे ध्यान जाता है, जब पीने का पानी पे ध्यान जाता है, तो ये सब चीज़ घूम फिर के अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था को ये बनाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, कंजम्पशन लेड ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, आज जो जनधन आधार मोबाइल, कोविड के समय भी 80 करोड़ जनता को पैसा मिल जाता था अपने बैंक खाते में, बिना बैंक गए उनके पास पैसा पहुंच जाता था, जबकि सारा दुनिया ठप थी कोविड के समय। ये छोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको सोच के देखिए। तो ये सब चीज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, मैं एक रूरल जिले से आता हूँ, कालाहांडी उड़ीसा से, तो मैं देखा हूँ कहाँ कैसे वहाँ पे परेशानी होती है और आज के डिफरेंस में देख रहा हूँ। तो यही सब चीज जो 10 साल में बदलाव आया है, ये मैं बहुत ही उम्मीदवार हूँ। अगले अपना 15-20 साल देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग जा ही रहे हैं, और रियल ग्रोथ है। ये ऐसे नहीं कि मतलब एक पहले जैसे 90 के दशक में होता था, ग्रोथ होता था, लेकिन वो एक टेम्परेरी ग्रोथ था। ये जो ग्रोथ है ये परमानेंट ग्रोथ है, ये परमानेंट ग्रोथ है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डेवलप्ड नेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बेहतर बनने जा रही है। तो यही सब चीज देश के लिए बहुत अभी आशा का किरण लेके आ रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर अग्रवाल, एक कमेंट हम थोड़ा सा आपका समझना चाहेंगे, और ये तस्वीरें भी साथ में क्योंकि चल रही हैं, इन तस्वीरों के बारे में बता दें। ये संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने
टैब के साथ जो एक लाल रंग के बैग में रखा हुआ है और हर बार इसी में नजरें होती हैं कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री किस तरह के ऐलान करेंगी, वो सब कुछ इस टैब में बंद है। कुछ ही पलों का इंतजार और है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर भी देखेंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, अब बात मैं चाहूंगी एक कमेंट आप उस पर भी करें जिस पर मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा नजरें होती हैं। बात होगी टैक्स की, जिसका सुजीत जी ने शुरू में जिक्र भी किया था। थोड़ा सा हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, जब हमने वित्त मंत्री का जुलाई 2024 का बजट भाषण सुना था, उसमें सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आंतरिक समिति बनाई थी ताकि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले, आसानी हो। अगर हम डायरेक्ट कोई ऐलान टैक्स में राहत का नहीं सुनते हैं तो किन और बड़ी बातों पर नजर रह सकती है, ताकि अगर डायरेक्ट कोई राहत नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्ट राहत पर नजर हो आम आदमी की? देखिए, जहां तक बात है, पहले मैं इनडायरेक्ट की बात करता हूं। इनडायरेक्ट राहत को अगर हम लोग एस्टिमेट करें तो ये बहुत बड़ी राहत है। सबसे पहले सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर कोई 2 GB 4 GB डेटा लेकर के, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर के प्रोफेशनल तक यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल। और इस डेटा का प्राइस क्या है आप इमेजिन करिए। दुनिया का सबसे सस्ता और फास्टेस्ट डेटा है, ये मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में देखें तो एविएशन के रूप में देखें या बैंकिंग रिफॉर्म के रूप में देखें, किसी भी टाइप के देखें, हम बिल पेमेंट देखते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का जो हैरेसमेंट हुआ करता था ऑफिसेज में, उससे बचत की बात है। हर जगह टाइमलाइन निर्धारित हो गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप की चीजें, ये सर्वाधिक अगर किसी को प्रभावित करती है तो मिडिल क्लास के जीवन को आसान करती हुई नजर आ रही। आज जब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े हैं तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही हम न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं इजीली। अगर कपल्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चा है, वो भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो जिस प्रकार का ईज ऑफ लाइफ भी आया है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो ईज ऑफ लाइफ भी आया, हाउस होल्ड लाइफ भी आया है, वो एक बहुत बड़ा, उसको हमने कभी बजट में फैक्टर इन नहीं किया है, जबकि हम लोग अपने स्तर पर शोध पर इसको देख रहे हैं, तो इसको भी फैक्टर इन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये आती है कि प्रोसीजरल जितना था फेसलेस, अगर आप देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, अक्रॉस कंट्री फेसलेस कर दिया है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि टैक्सेशन रिफॉर्म, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट जो हम बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार की रणनीति और वातावरण बन रहा है, खासतौर पर डिमांड प्रमोशन के लिए, और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं, जिसको मैं कहता हूं परंपरागत आकांक्षा क्या है, इनकम टैक्स में डायरेक्ट रिलीफ मिलना, तो मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ऐसा मेरा बहुत सशक्त विश्वास है। और यही नहीं, स्लैब में भी चेंजेस आएगा। और मैं बता दूं कि सरकार ने जो टैक्स वाइडनिंग किया है, आज लगभग 7 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो रहे हैं, 3 करोड़ न होकर के लगभग 6-7 करोड़ ये हो रहा है, और बहुत तेजी से वाइड हुआ है। जीएसटी में भी आप देखेंगे कि जो लीकेज, हालांकि बजट से जीएसटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन बजट पर प्रभाव डालता है, ये हमको देखना पड़ेगा, और ये कि बहुत बड़ा बैलेंसी का काम कर रहा है। तो इनकम टैक्स जहां तक बात आती है, मुझे लगता है इसमें चाहे हाउसिंग लोन में जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट भी बढ़ सकती है, इसी प्रकार से और भी जो बेनिफिट्स हैं, खासतौर पर स्लैब्स के रूप में या टैक्स रेट्स के रूप में, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इसमें मिडिल क्लास को जरूर खुश होने का अवसर प्राप्त होगा। सुजीत जी, अगर बात करें रोजगार की, कहते हैं आधारभूत ढांचा उसका जितना विस्तार होता है उतना ही रोजगार भी बढ़ता है। 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान था, 10 साल पहले की बात करें वो 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और लगातार एक्सपेंड हो रहा है। सबसे ऊंचा ब्रिज हम बना रहे हैं, सबसे आधुनिक ट्रेन हम निर्मित कर रहे हैं, रोड्स हाईवेज लगातार बढ़ रहे हैं, टनल्स बढ़ रही हैं। तो क्या माना जाए, इसमें
बजट में और ज्यादा प्रावधान रखा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उसका सीधा सीधा असर रोजगार के क्षेत्र पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये बजट रोड मैप प्रेजेंट कर रही है 2047 के लिए। प्रधानमंत्री जो बार-बार जब कहते हैं विकसित भारत और ये अमृतकाल की बात होती है, तो ये हर बजट, हर जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये एक माइलस्टोन होती है वहाँ 2047 के लिए। और हाँ, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि रोजगार अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 करोड़ लोग हर साल अपने जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ही जॉब क्रिएट करती है। देखिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई पे हम लोग जब तक नहीं ध्यान देंगे, तब तक जॉब्स नहीं होगा क्रिएट। और जो अपने जो स्टूडेंट्स और ये जो यंग वर्कफोर्स है, आज देखिए 25 साल से आधी हमारी आबादी है, 700 करोड़। अभी 140 करोड़ की आबादी में से आधा अगर 25 साल से कम है, वो 700 करोड़ हो गया। तो ये कल चल के यही सब जॉब मार्केट में आएंगे, तो इनके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एमएसएमई पे थोड़ा ज़्यादा मैं उम्मीद रखूंगा कि वित्त मंत्री जी एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने 2-3 चीज़ जो कहा कि जीएसटी का एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, लोकल प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई को प्राधान्य दिया जाए, कॉम्प्लायंसेस कम किया जाए। तो एमएसएमई और मुद्रा लोन देखिए 10 लाख से 20 लाख हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पूछिए किसी भी स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को एमएसएमई मुद्रा लोन लेना कितना मुश्किल है, बिना कोलेटरल के देते नहीं है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान और सरकार को देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही मेरा मतलब आशावादी हूँ कि ये आगे 15-20 साल हमारी स्वर्णिम दिन है, और प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में जो देश के लिए जो फाउंडेशन जो ले किया है, ये 50 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन चलिए 2014 से शुरू हुआ है और ये हमको विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है। जी, यहाँ पर लोन की बात करें अगर सुधीर जी, एनपीए एक बहुत बड़ी चुनौती थी बैंकिंग सेक्टर के सामने, और अब ऑल टाइम लो पर आ गया है, 2.6% रह गया है। अब क्या बैंकों के सामने एक रास्ता है कि अब लोन जो खींच कर हाथ दिया जा रहा था, अब थोड़ा सा उदार होकर लोन दिया जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फायदा होगा और व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे? देखिए, मैं जहां तक महसूस करता हूं, 11% से 2.6% पर आया है। हम 11% एनपीए पर बैठे थे, वहां से आज 2.6 पर हैं। तो ये तो मोदी जी का जो विजन था, उसके बिना ये संभव नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर जो कि एक तरह से कोलैप्स हो रहा था, उसको मेंटेन किया। अब आप बैंकिंग सेक्टर के हर पहलू को देखें तो जो अपनी पूरी चर्चाओं में सार आया है कि नीचे जनधन अकाउंट से लेकर ऊपर हायर लेवल तक हर सेक्टर में बैंक अब पहुंच चुका है। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर के पास हो, चाहे वो मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से करोड़ों अकाउंट्स हों, तो चाहे वो, मैं अपने क्षेत्रों में जब फोकस करके देखता हूं तो इंडस्ट्री के लिए लोन अब इजी अवेलेबल है, यानी बैंक अब घर आ जाती है। तो लोन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड हुई और सब्सिडी सेक्टर को जो स्ट्रॉन्ग किया है, एमएसएमई सेक्टर में तो गजब का सब्सिडी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सब्सिडी को फोकस किया है, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, और वो बिना बैंक के, बिना नाबार्ड के संभव नहीं था। तो डोर अप्रोच हुआ है। बड़ी यूनिटें भी अब बहुत तेजी से और फाइनेंस को ले पा रही है, पर इतना इजी तो नहीं करना चाहिए कि लेकर निकल जाओ। तो जो लेकर निकल जाओ, वो तो मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी के हस्ताक्षर से इतना फैसिलिटी होगा। हम चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर से उनके हितों का संरक्षण होते हुए मैक्सिमम पैसा जो आज डिपॉजिट बैंकों में रखा वो लोगों तक पहुंच रहा है, और लोगों का फोकस बैंक डिपॉजिट के साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में भी सीधा सीधा आ प्रोफेसर गया। अग्रवाल से भी समझना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट है प्रोफेसर अग्रवाल, जिस बात का जिक्र भी सुधीर जी भी कर रहे हैं कि बड़ी बात जो कल सामने आई कि अब भारत में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है वो बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर समझ रहा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। और बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका जैसी, जहां लोगों में ये ट्रेंड पहले से देखा जाता था। तो ये बदलाव आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये किस दिशा में जा रहा है और क्या संकेत दे रहा है? देखिए, यह हमारे कैपिटल मार्केट का स्टेबिलिटी का प्रमाण है कि जो हमारे यहाँ के शेयर मार्केट कॉमनली जो हम समझते हैं, या इसी प्रकार से अन्य जो मार्केट है, हम लोग इसको स्कैम फ्री एरा में आ गए हैं। आप याद करिए, पहले हुआ क्या करता था, हर तीसरे चौथे साल कोई ना कोई स्कैम हुआ करता था। 2014 के बाद से ये शब्द शेयर मार्केट से लगभग गायब हो गया है। वो बेतुका वोलेटिलिटी जो हुआ करती थी वो गायब हो गई। तो आम निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ा है। दूसरा क्या है कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी और कोरोना काल में भारत ने अपना सिक्का जमाया है क्रेडिबिलिटी का,
आप देखिए तो लोगों का जो विश्वास बढ़ता है उस सिस्टम पर बढ़ता है, और सिस्टम जब हमारा विश्वसनीय होता है, स्ट्रांग होता है और उसके चेक बैलेंसेस स्ट्रांग होते हैं। इतना सब कुछ हिंडनबर्ग ने किया, लेकिन हमारा शेयर मार्केट नहीं हिला। उनका अभिप्राय कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारा चूंकि फंडामेंटल पर बेस है, चेक बैलेंसेस उसके स्ट्रांग हैं, तो ये लोगों में भरोसा पैदा करता है। आप याद करिए, स्कैम शब्द आपने कब सुना होगा? मुझे नहीं लगता पिछले 10-12 सालों में ये शब्द जो है किसी के कान में आया भी होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ अब जो निवेश हो रहे हैं, अब निवेश रियल निवेश हो रहे हैं। आप देखिए तो सब्सिडी को लेकर के नहीं, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के नहीं, यानी कि रियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल को प्रमोट किया जा रहा है। यूथ्स को भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है। ये सारी चीजें यदि आम लोगों को आकर्षित करती है निवेश करने के लिए, तो दूसरी ओर हमको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और यही कारण है, मैं इसी लाइन से अपनी बात को रोकूंगा, कि हम लोगों का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे 90% जो लोन्स हैं उसको कवर करता हुआ नजर आता है। तो लोगों को ये भी भरोसा है कि हम फिनेंसेस पर देखते हैं या किसी रूप में देखते हैं, तो भारत की आज वित्तीय आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो हमारा सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और सेफ हैंड्स में है, जिससे हम विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें सभी अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल, और इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रोफेसर अग्रवाल आपका, सुधीर जी आपका, सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सीधा प्रसारण आप कुछ ही पलों में देख पाएंगे। ठीक 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, और संसद टीवी पर बजट पेश होने की जो प्रक्रिया है वो भी आप पूरी देखेंगे, और उसके बाद भी जो लगातार विश्लेषण है बजट को लेकर वो भी संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, 8वां वित्त बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जब लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब उनका बजट भाषण आप सुन पाएंगे आपकी अपनी भाषा में। ऑनरेबल स्पीकर, समझ पाएंगे देश का बजट कैसे जुड़ेगा आपके सपनों से, क्योंकि बजट के हर फैसले का असर होता है सीधा आपकी जिंदगी पर। बजट तय करेगा देश के विकास की दिशा और प्रगति की राह। संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखिए बजट का सीधा प्रसारण 1 फरवरी सुबह 11 बजे से, अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी। What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. When the Finance Minister presents the Union Budget in the Lok Sabha, now you can listen to the speech in your own language. Honorable Speaker,
understand how this budget aims to meet aspirations, empower the youth, and shape India's future. Because every budget decision impacts your life. Budget will define India's growth and progress. Watch it live on Sunset TV's YouTube channel on 1st February 11 a.m. in English, Hindi and other Indian languages. What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure, or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. महात्मा गांधी एक प्रखर लेखक और संपादक भी थे। उनके विचार जन जन तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाएं, डायरी एवं पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बनी। संसदीय पुस्तकालय में उनके लेखन को समर्पित एक संपूर्ण अनुभाग की स्थापना 9 अगस्त 1978 को की गई, जिसे नाम दिया गया गांधीयाना। इस अनुभाग में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी, उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy.
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण में, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive healthcare, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development,
investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna
is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores.
Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors, which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship, and Management
in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health,
and Sustainable Cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare and cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land,
and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport
and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources.
We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID
will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26.
Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg
whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide
operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows: personal income tax reforms with special focus on middle class, rationalization of TDS and TCS for easing difficulties, encouraging voluntary compliance, reducing compliance burden, ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties,
I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country.
extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them.
The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and my macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty,
central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. महात्मा गांधी एक प्रखर लेखक और संपादक भी थे। उनके विचार जन जन तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाएं, डायरी एवं पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बनी। संसदीय पुस्तकालय में उनके लेखन को समर्पित एक संपूर्ण अनुभाग की स्थापना 9 अगस्त 1978 को की गई, जिसे नाम दिया गया गांधीयाना। इस अनुभाग में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी, उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn from this fund without Parliament's approval. भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ Good afternoon, viewers. Welcome to this post-budget analysis telecast on Sansad TV. I am Tina Jha. With me is my colleague Manoj Verma. So, Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the year 2025-26 in Parliament, which was her 8th consecutive budget presentation, and in which she outlined the core priorities of Budget 2025, emphasizing 5 key objectives, which are driving economic growth,
ensuring inclusive development, boosting private sector investment, strengthening household consumption, enhancing the spending power of India's expanding middle class. The finance minister said this budget aims at transformative reforms in 6 areas, which include taxation, financial sector, the power sector, urban development, mining, and regulatory reforms. Also aiming to stimulate economic expansion, enhance infrastructure, improve governance, and promote sustainable development across multiple sectors. She reiterated that these remain central to the government's agenda. We'll be talking about some of these broad objectives that the government has outlined in greater detail with distinguished experts who are joining us on the program. I'm delighted to welcome in the studio Dr. Priyadarshi Dash, Associate Professor at Research and Information System for Developing Countries, New Delhi. And also joining us virtually is Professor M.K. Agarwal, Professor of Economics, Lucknow University. Manoj? जी बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह के ऐलान किए गए हैं इस वित्त बजट में उसको लेकर अपेक्षा भी थी और वित्त मंत्री जी ने जो इनकम टैक्स को लेकर 12 लाख का जो ऐलान किया वो एक तरह से बड़ा तोहफा है। जाहिर सी बात है, समावेशी विकास की बात है, विकास को कैसे गति दी जाए इस पे जोर दिया गया है बजट में, खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए एक आत्मनिर्भर भारत और साथ ही विकसित भारत का लक्ष्य, ये फोकस है पूरे बजट का। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी पहलुओं से आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे जिनका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है। टीना, Absolutely. So we'll get into the sector specific allocations, the kind of focus that the government has provided to the middle class, to different sectors as well. But before that, let me get in the first reaction from the guest we have with us in the studio. Professor, your first thoughts on this budget. How do you see it building up on the budget which was presented soon after the election 6 months ago? I think you are right. The finance minister presented the budget which sort of prepares the blueprint for the Viksit Bharat. And this is a continuation of the stand they have taken in the last 4-5 years to prepare the country to meet the emerging challenges of meeting sustainable development, making a smooth energy transition towards clean and other areas, solar energy and other areas. So if I see the budget, this sort of tells that story in a very deeper way compared to the past. This time you see that they have gone into the sectors, infrastructure sectors that are crucial to maintain economic growth. जी. But at the same time, how to address the vulnerabilities that people are facing. We are growing, but we have price rises. By ensuring higher medical coverage, by bringing more life-saving drugs to the scheme, John Siddhi scheme and others. So there's a kind of blend of the growth objective with social security measures, taking into account the specific challenges faced by the manufacturing sectors, MSME sectors. So overall, the budget is more of a roadmap for the future India that we can visualize in the next 20-30 years. But of course, the immediate priority would be that people see that how the taxation reforms has happened. And it's a great relief for the people, at least up to 1 lakh of their income, they are not liable to pay any tax. So overall, it looks a balanced budget. So, it's a huge relief for the middle class, but that is one aspect, the taxation part that we'll come to in just a bit. Professor Agarwal, what would be some of the significant takeaways for you, particularly from this budget? Does it meet the expectations that all of us and the different sectors had from Finance Minister Nirmala Sitharaman? See, as far as expectation of different sectors, it is never completed, but whatever we discussed and whatever we aspired for the, taking the economy forward at very high pace, while taking all on board, that is the inclusive growth strategy and pushing the economy forward, we believe that whatever we discussed in the morning, that came true, whether it is for the middle class benefits. And in terms of middle class benefits, definitely it is the direct tax benefit. Other than that, there has been a procedural
you can say smoothness that has been conducted. Senior citizens have been taken care of. Besides, if you are looking at the things through this, what has Nirmala Sitharaman has done is that is linking it with the growth strategy. It is not simply a dole out to the, in terms of income tax. There have been indirect taxes also, whether it is the basic custom duty, etc. There has been a great relaxation, and all are being done with the aim to promote Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For example, if custom duty has been relaxed on the cancer drugs or other drugs, so what is the objective? Objective is to promote drug manufacturing in India. So given this type of thing, we believe that the budget is very well packaged for inclusive growth strategy and developing new growth centers. Whatever it is called, it is the growth engines that Nirmala Sitharaman has called. There are 4 growth engines she has defined through. And then efficient production structure that has been highlighted very well in this budget. So that is the hallmark. And it is in continuity with the earlier budget, whether it is for the 24-25 or even earlier budget, or it is linked with the next 5 to 10 budgets. You will find that it is the base or the ground for the next 5 to 10 budgets. You can read out what is going to come for the next few budgets. So I believe it is highly growth centric, highly it is equity oriented, and highly it is for the new growth momentum to be generated in the economy. So I believe it is a great source of इंस्पिरेशन फॉर द फर्दर बजट्स। जी बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है, और जैसा निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा कि समावेशी विकास को गति देगा ये बजट। सबका ख्याल रखा गया है इस बजट में। एक तरह से कहा जाए कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने का कोशिश की है निर्मला जी ने। मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात हम और दूसरे पहलू पर भी करेंगे, लेकिन बात मैं करना चाहता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, किसानों की। क्योंकि अगर देखिए, चाहे मखाना बोर्ड के गठन की बात हो बिहार में, या कपास के किसान की चिंता हो, या किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स का निर्मला जी ने अपने बजट में ख्याल रखा है और अधिक से अधिक देने की कोशिश की है। क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो हमारी जीडीपी को ग्रोथ देने का काम करती है, उसे गति देने का काम करती है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक रेसिडुअल सेक्टर के हिसाब से नहीं मानना चाहिए। जी, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्रीकल्चर को हमने कभी इंपोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी ये मान लिया जाता है कि वहाँ पे डिपेंडेंस ज्यादा है, शायद इसी तरह ही एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन होगा। बट ये जो थोड़ा डीप थिंकिंग है इस बजट में, कॉटन बोर्ड, ये जो मखाना बोर्ड, ऐसा करके जो पोस्ट ऑफिस को एक ज्यादा तो रोल दिया गया है, मुद्रा स्कीम, ये जो स्कीम को प्रमोट करने के लिए विश्वकर्मा जो सब है उनको, तो ये एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग का अप्रोच रखा गया है कि जो स्कीम सरकार लागू करती है वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं ग्राउंड में, और अगर कुछ गैप्स रह जाता है तो शायद ये पोस्ट ऑफिस का जो 2.5 लाख जो सेवक होंगे जी, उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि प्रोग्राम का सक्सेस का पैटर्न क्या है, ये सच में मदद करता है कि नहीं टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अदर थिंग्स। उसको छोड़ के जो एमएसएमई और जो स्टार्टअप को जो बढ़ावा दिया गया है, जो क्रेडिट गारंटी के जरिए वो दिए रहे, वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे लास्ट जो पीछे प्रेजेंट किया गया कल, उसमें ये बोला गया है कि अर्बन डिमांड हैज स्लोड डाउन, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी काफी फेवरेबल है, जो जिसके वजह से अभी कंजप्शन, ओवरऑल कंजप्शन जो इंडियन इकोनॉमी में वो अच्छा है। तो रूरल सेक्टर का ये जो मोमेंटम है, उसको मेरे ख्याल से बजट का जो ऑप्टिमिज्म जो क्रिएट किया गया है, खाली फाइनेंस दे देने से नहीं होगा, फाइनेंस का साथ जो इंसेंटिव का पैकेज करना था थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दिशा दिखा रहा है। जी बिल्कुल टीना, जैसे देखा जाए कि दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, इस दिशा से भी एक 6 साल का मिशन शुरू करने की सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। टीना
You're right, Manoj. And since we're talking about agriculture, let me remind our viewers that in the budget that was presented soon after the elections in July, agriculture was among the top priorities in the list of 9 priorities that the government had announced. In this budget, we are seeing the consistent focus on the critical agriculture sector, which contributes significantly to the country's growth, also generates significant employment, very critical for the country's growth. Professor Agarwal, and towards agricultural focus, we're seeing a new scheme coming up, the Dhan Dhyan Krishi Yojana, which is going to cover 100 districts with low yields, modern crop intensity, and below average credit parameters. Now, how do you see this strengthening our efforts, the existing efforts of the government towards increasing productivity and at the same time increasing resilience? See, this is the strategy. You know, those who were outside the growth momentum of the nation or the economy, these were the outliers. Just look at it. These were the outliers, low productivity districts. Now they are being transformed into high productivity, high value addition crops. So that is the strategy, and this is you can say convergence. What we call in economics, it is the convergence moment. That is, those who have been lagging, they are given a big push so that they are moving with high growth, so that they can come up with the mainstream growth momentum. And this is about it is not only in one state, it is across the states. Similarly, if you are looking, this is for the Atmanirbhar. So you will find many, objectives are being fulfilled through one stroke. That is, Atmanirbhar Bharat Abhiyan is being fulfilled. Similarly, if you are looking at the urea, you will find that it is being established in the eastern part of the country, so that we are Atmanirbhar in terms of urea supply to the farmers. Similarly, you will find that Kisan credit card, they are being recharged double. That is, instead of 3 lakh rupees, now it will be 6 lakh rupees. So credit flow has also been increased so that they don't feel any constraint with regard to the availability of funds for taking agriculture forward. So this is the way that this strategy is there, and you'll find the rural sector has been given a big push here. This is what we were discussing in the morning, that the economy is being pushed across the sectors, whether it is the agriculture sector. So what earlier we were thinking about, that agriculture is a lagging sector or a dependent sector, now no more it is a dependent sector. The way Modi government is putting thrust on the agricultural sector, it will be a great propellant in the coming years. Already the growth rate, if you are looking through the economic survey for the current fiscal, you will find the growth rate is much higher after being higher in the earlier years also. So it will be a propellant for the overall economic growth rate, and that's why we are chasing a growth rate of 7% plus in the next few years. So that's why we should look with this perspective, and this is the strategy that rural income and farmers' income has to be doubled in the coming period very soon. जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से प्राथमिकता बजट में दी गई है और रोजगार को सृजन कैसे हो एमएसएमई सेक्टर के जरिए, इस पर खासा फोकस किया गया, काफी जोर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गिग वर्कर्स को अभी तक हम लोग अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे जी। अगर आप गिग वर्कर्स को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अर्बन वर्किंग क्लास डेवलप हो चुका है जो अपने दम पर काम कर रहा है। उनके लिए एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखने से क्या होगा, ये जो सेक्टर इमर्ज किया है करोड़ों लोगों का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। अपने ऊपर काम करने के, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है और जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख करके चलते हैं तो मुझे लगता है एक ये बड़ा बूस्ट हो रहा है। दूसरा, जैसे बात आ रही है कि एमएसएमई सेक्टर को
और इसमें एक विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जिस सेक्टर को अभी तक हम लोग सुनते नहीं थे, अभी 2-4 वर्षों से सुनना शुरू किया है, टॉयज को लेकर के जो एक अलग बोर्ड गठित हो रहा है। भारत की अगर डेमोग्राफी को आप देखते हैं और विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी का जो इस पर फोकस है, इस पर फोकस ठीक वैसे ही है जैसे कि स्टार्टअप पर है प्रधानमंत्री जी का। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर टॉयज बन रहा है, एमएसएमई सेक्टर। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक होकर के देखते हैं तो आपको लगेगा नए नए सेक्टर को सृजित किया जा रहा है ताकि वो बहुत तेजी के साथ इमर्ज कर सके, न केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, न केवल जो है अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न केवल अपने स्टार्टअप के माध्यम से या अच्छी पूंजी के माध्यम से, बल्कि उनको ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पीट कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो सृजन हो रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए नए नए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। Rightly said, Professor, and that's why the Finance Minister described the MSME sector as the second engine of growth in her budget speech. She said through the measures that she's announced today, the focus is on the 5.7 crore MSMEs, which include over 1 crore registered businesses, employing 75 crore people and contributing 36% to India's manufacturing. The MSMEs, remember, play a very crucial role in positioning India as a global manufacturing hub and accounting for 45% of the nation's exports as on date. Professor Dash, how significant are the measures that the Finance Minister announced for the MSME sector in her budget? Yeah, I mean, as I said, the credit guarantee cover by increasing from 5 crore to 10 crore, and for the startups from 10 crore to 20 crore. And then a specific incentive for those who are exporting MSMEs. So this is kind of not giving incentive in a blanket way, but rather targeting the incentives the way it works. Like those who are exporting MSMEs, to giving them additional incentives so that they could sort of focus on what are the marketing strategies they need, how sort of product development efforts they should do. If you compare that with the overall manufacturing ambition by creating national manufacturing mission, and then thinking about skilling, and then expanding the capacity of IITs and others. So overall, it's a mix of promoting the industry, preparing the people to sort of work in those sectors, and at the same time, extending social security to the digital platform workers, gig workers. So all together, the industry push that they give in the third pillar, like investment as the engine, overall, it looks quite impressive in terms of the intent of the budget. Now, everything will boils down to the implementing ministries, that how do they target those implementation and see that this actually works, because manufacturing is the subject matter of discussion now. Despite of so much of policy announcement, made in India, make in India and other things, this PLI scheme, we have not been able to give the result which would sort of impress everybody that yes, we have done something. Sure. Before we proceed and discuss another sector, let me welcome on the program Professor Charan Singh, CEO, eGrow Foundation. Professor, glad to have you with us on this telecast. Your first reaction, sir, on this budget, which is in a way building up all the measures, all the announcements that the government had made back in July 2024. I'm very impressed with this budget. And I think, firstly, the most important thing, the objective that they spoke about, Viksit Bharat 2047, I see that it is in the same direction. That is something very important. Secondly, I see continuity. In the last budget, the finance minister had spoken about youth, women, farmers, poor people. That continuity is there. The third, the FM has pointedly spoken about the fiscal policy, about the financial sector policy. I'm very impressed because the budget is a tool of a fiscal policy, and so much of emphasis directly being given to both is very impressive. I'm also very impressed. We all knew in the last few months, there's a big problem coming up on consumption, and we were all saying that the middle class needs to be now supported. For the categories for which policies and the budget has been announced, you would notice
that the emphasis on the middle class has improved significantly. Consequent to that story on the middle class, the tax reforms, firstly, the ones which are being announced to be presented in the parliament next week, as well as the tax rates which have been announced today, specifically on senior citizens and tax exemption for incomes less than 12 lakhs, I think is path-breaking. So the middle class has been catered to, and that means this government listens and they analyze, and whatever is possible, then they accommodate. With tax buoyancy taking place, little headroom available, I think the budget has done great justice to the objective of the middle class. Overall, I would say, given the situation of the economy, a slowdown that has happened, the government is trying to correct that, giving it an impetus on MSMEs, as you heard it. They have also been talking about female labor force participation, daycare centers and what all that's going to happen, as well as the last point I would like to mention in this is the trust factor. The trust factor is being emphasized, and I'm very happy with that, because in case you have trust on the private sector, then you can invite the private sector to shoulder work in Viksit Bharat March. Otherwise, for the public sector, yes, you can crowd in investment, capital expenditure can increase, which has increased. The fiscal deficit is in control, so rating agencies must be happy. The exchange rate will be in control. All that is being done. But the trust that is being now inspired through the private sector, I think is very, very good. So I'm very impressed. प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक की छूट का ऐलान किया गया है, जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद एक बड़े वर्ग को थी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, और हमें विस्तार से बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, लोगों के जीवन पर, क्योंकि एक वर्ग है देश में जो पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। एक नया मध्यम वर्ग ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है, जिसकी तरफ सरकार बार-बार इशारा कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, जो हमारा मध्य वर्ग है, ये कुछ वर्षों से आप जानते ही हैं, कुछ इन्फ्लेशन की मार थी और कुछ एम्प्लॉयमेंट का भी जोर था, अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी का आपने आंकड़ा देखा है, कल इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि 6% से 3% पर आ गया है। इसका मतलब वहां पर भी, उस पहलू पे भी थोड़ा काम किया गया है, लोग रोजगार उनको मिल रहा है। पर क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन थी, तो वो आपकी जो अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसकी वैल्यू गिरती जाती है। एक बात आपने देखा होगा, और कुछ लोगों ने और हम सब लोगों ने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूम करनी बंद कर दी थी, और तो और पीछे रह गया। जो जीवन बीमा है या जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पहली कटौती करते हैं तो वहां करते हैं। उन तरीके से एक स्ट्रेस दिख रहा था कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो थोड़ा अपना खरीदा खरादी में कमी कर रहे हैं, या कुछ चीजों में ऐसे दिख रहा है कि उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, आपकी आय में उस तरीके से कुछ कटौती होती जा रही थी, इरोजन हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, ये सब बढ़ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? तो जिस तरीके वित्त मंत्री ने आज सीधा 12 लाख पे कह दिया कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, इसका मतलब 12,75,000 तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये मध्य वर्ग के लोग, कुछ तो जैसे आपने कहा कि लो इनकम ग्रुप से या पॉवर्टी रेखा से ऊपर आ रहे थे, पर कुछ जो ऐसे थे जिनको एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आ रहा था या इन्फ्लेशन का चैलेंज आ रहा था, उस मध्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके हाथ में भी कैश ज्यादा आ गया। तो जब उन्होंने कहा कि अब टैक्स लैब्स में उन्होंने चेंजेस किए हैं, पर उन्होंने जो अपने कैलकुलेशन बताया कि जो एंट्री लेवल पे या मिडिल इनकम ग्रुप है, उनका इस 12 लाख तक लिमिट ले जाने से 80,000 रुपए का उनको जैसे हाथ में फायदा हो गया। 80,000 का मतलब आप देख लीजिए कि करीब 6-6,500 रुपया हर महीने का उनका हाथ खुल जाएगा। वो कहाँ जाएगा पैसा? वो खर्च होगा। जब पैसा खर्च होगा, जिन चीजों को रोक के रखा हुआ था, जब पैसा खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी।
डिमांड बढ़ेगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उससे एक साइकिल शुरू हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कुछ ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो जो पिछले सेकेंड क्वार्टर में 5.4% ग्रोथ आया था, जो हमारे अनुमान से काफी कम था, उस अनुमान के कारण कंजम्पशन के प्रेशर दिख रहा था, उसको इन्होंने रेक्टिफाई किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग विश्लेषण करते हैं, बात सुनते हैं ये सरकार, और उसके बाद एक उपाय निकालते हैं। मेरी राय में ये उपाय ठीक निकाला है। इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, इकोनॉमी का साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरी राय में ये कदम बहुत अच्छा हुआ है, और जो लिमिट इन्होंने 12 लाख पे रखी है वो भी बड़ी अच्छी लिमिट रखी है। आप कह सकते थे 6 से 9 कर सकते थे जी, 6 से 10 कर सकते थे, पर जिस तरीके इन्होंने लिमिट रखी है उसका बड़ा अनुमान लगा के रखी है कि 80,000 रुपए का फायदा एक पुरुष महिला को मिल जाएगा जो कमा रहे हैं, उससे इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। तो मैडम ने ऑनरेबल एफएम ने कहा कि ये सारी जो हम लोग इनकम टैक्स पे रियायतें दे रहे हैं उसका हम लोगों को कितना एक चोट पड़ रही है। पर क्योंकि टैक्स बॉयंसी है, जीएसटी का रेट अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम लोग इसको अफोर्ड कर पाए हैं। You're right, Professor. So while you know that increased income tax exemption, Professor Dash, provides a massive welcome relief to the middle class who is rejoicing, the markets have turned red to this kind of announcement. What are the implications that you see in the coming days of this measure, which benefits the middle class, and they had been anticipating, demanding this from the finance minister, but on the government's purse, on the markets? See, I think we have to see it holistically. On the fiscal front, the macroeconomic management has been good, as she reiterated in the budget, that the fiscal consolidation will continue. But if you see the media coverage in the last, on the run-up to the budget, there have been a few concerns as well, that the wage has not grown the way it should have increased. I'm not going into the statistics, whoever has written, that may be subject to methodology and data they have used. Urban demand has gone down. Yes. So the multiplier role that the consumption demand that will play in fueling growth, along with capex, it is going to happen as Dr. Singh mentioned, but the whole thing would depend on how are they sort of managing the burden on the exchequer. The burden on the exchequer is that the pay commission has been announced. Now, in 1 year down the line, there will be a large payout. So there is a lot of optimism that it will go into 2.57 more than 2.57 than seventh pay. So the fiscal room that the government is enjoying now probably will not worsen, but it will kind of be a situation where they have to choose what sort of incentives they can offer. But otherwise, the consumption is going to increase because the disposable income will increase because of this thing, because you are not paying more in terms of the tax. So that is less leakage from your income. So you will spend more. Capex is generating more income anyway because that is project expenditure and building of infrastructure. So overall, it looks quite favorable on the consumption side. So investment and the consumption, the two critical enablers of the economy, for the time being looks quite favorable. Now, how the global uncertainty will play out, how will be the response of the Trump administration to some of the things that the Biden Trump administration has indicated in terms of tariff and other things. So if those things doesn't escalate and the global uncertainty sort of meddle down or sort of precipitate around what has been already mentioned or what has been highlighted through the World Economic Outlook by IMF and World Bank Outlook, then I think domestic economy will be on the rail, on the track, not much mismanagement
is going to happen that way. Right. So we're going to keep discussing about some of the other important announcements made by the finance minister in her speech this morning. But for those of you who missed listening to her 1.5 hour long speech, here is a quick highlight of some of the important announcements made by the finance minister in her 8th consecutive budget. Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive healthcare, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Viksit Bharat. जाहिर तौर पे जिस तरह निर्मला जी ने अपने बजट में इस बात का जिक्र किया कि सरकार का फोकस पिछले 10-11 वर्षों में खास तौर से गरीब कल्याण योजनाओं पर रहा है, यूथ पे रहा है, अन्नदाता को किस तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इसका फोकस भी इस बजट में देखने को मिलता है। पहले भी इस तरह की जो हमें देखने को मिला है, और साथ ही नारी शक्ति को किस तरह से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, इस बार भी उस पर फोकस रखा गया है। निर्मला जी ने इसका जिक्र किया। प्रोफेसर चरण सिंह जी, मैं आपसे और समझना चाहूंगा, खासतौर से जो 12 लाख की इनकम टैक्स का मुद्दा है, मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्योंकि एक देश में एक सर्विस क्लास है जिसको लंबे समय से बहुत अपेक्षाएं थी। सरकार ने जीएसटी जैसा सुधार किया, सरकार के पास पैसा भी आया, और सरकार ने उस पैसे को एक अपने खजाने को, एक तरह से मैं कहूं राजकोषीय घाटा एक चुनौती है, लेकिन साथ ही देने की भावना जो है सरकार की, वो दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं जो सर्विस क्लास है? 8वां वेतन आयोग भी सरकार ने अनाउंस किया है। बिल्कुल, सरकार ने 8वां वेतन आयोग अनाउंस किया है, तो उससे भी तो मिडिल क्लास को फायदा हो ही रहा है। उसके ऊपर हाउसिंग जो इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री अर्बन हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की, उसमें भी फायदा हुआ। उड़ान स्कीम जो किया है, और अभी इस बार के बजट में भी किया है, जहां वो कह रहे हैं कि 120 और एयरपोर्ट्स बनेंगे और उड़ान स्कीम का फायदा होगा। सो जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज की जो स्कीम थी वो भी हुई। उसके अलावा जो आयुष्मान स्कीम्स निकाली, जो इंश्योरेंस स्कीम्स निकाली, वो सब, और मुद्रा लोन में जैसे लिमिट बढ़ाया, वो सारा एक मिडिल इनकम ग्रुप को ही एड्रेस कर रहा है। और मेरी राय में हम ठीक कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके का बजट से पहले काफी लोग कह रहे थे कि मिडिल क्लास को नहीं मिल रही है राहत और वो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट दिख रहा है, वो ठीक बात है। पर क्योंकि ये बात सामने आई और क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन इकोनॉमी में सेकंड क्वार्टर में स्पेशली हुआ, तो सरकार ने उसका रेमेडियल मेजर निकाला, जिसके नीचे ये जो 12 लाख की बात हुई। अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात आ रही है, जो अगले हफ्ते कह रहे हैं कि हम लोग अनाउंस करेंगे, उसमें भी जो समझ में आ रहा है कि सिंप्लीफाइड होगा, कॉम्प्लायंसेस भी सिंप्लीफाइड होंगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अलावा जो बाकी के डिडक्शंस आती थी जो कॉम्प्लेक्स कर देती थी टैक्स सिस्टम को, वो सारी जैसे वो रैशनलाइज कर दी जाएगी। उससे टैक्स सिस्टम एकदम सिंपल हो जाएगा।
एक साइड में जो कंप्लायंस का डर था कि इतना अनसर्टेनिटी रहती है टैक्सेस में, इतने टैक्स के स्लैब्स हैं, इतने उसमें डिडक्शंस हैं, उनको आप एक किस्म का कंफ्यूज ही रहते हैं कि कहाँ पे मुझे किस उसके नीचे राहत मिल सकती है। वो सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी जाएंगी अगले हफ्ते। तो उससे दो तरीके से एक मिडिल इनकम जो ज्यादातर टैक्स का बर्डन हैंडल करता है उनको फायदा होगा। एक तो टैक्स का अमाउंट कम हो गया क्योंकि डिडक्शन बढ़ गई। उसके बाद टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए, और टैक्स स्लैब्स भी जो रिवाइज किए गए वो बड़ा सिंपल से कर दिए गए। 4 लाख रुपए तक निल है, 4 से 8 5 है। देखिए अब मल्टीपल ऑफ 5 पे चल रहा है, बड़ा सिंपल चल रहा है। 4 से 8 5 है, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और अबव 24 लाख 30% है। टैक्स कलेक्शन तो करना है, टैक्स कलेक्शन जरूरी है। टैक्स कलेक्शन के कारण आप फिर आगे एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज ये सब दे सकते हैं। वैसे भी जो टैक्स कलेक्शन हमारे देश में है कुल मिलाकर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन, लोकल टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, कुल मिलाकर 17% ऑफ जीडीपी बनते हैं। विदेश में जिस अमेरिका से हम लोग हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं, वहां पर 35% ऑफ जीडीपी का टैक्स कलेक्शन है। स्वीडन वगैरह में 40% से ज्यादा है, हमारे यहाँ पे 17% है। सो टैक्स कलेक्शन तो करना है क्योंकि हम लोगों ने जो पहले ऋण ले रखा है उस पर भी इंटरेस्ट पे करना है, सब्सिडी है, सरकार चलनी है, पुलिस फौज सब चलना है, तो टैक्स कलेक्शन तो करना है। पर उसमें जो थोड़ी सी गुंजाइश जीएसटी के बॉयंसी से मिल रही है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है, वो सब का लाभ फिर अभी मिडिल इनकम ग्रुप को दिया जा रहा है। जिस हद तक दिया जा रहा है, जैसे कहते रहे जितनी चादर है उतना ही आप पैर पसार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप कह सकते हैं कि 18 लाख क्यों नहीं किया है, या टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं बढ़ा दिया है। पर मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जितनी हमारी टैक्स कलेक्शन है, जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंडिचर हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी चादर है। तो मेरी राय में ये उस मुताबिक ही किया गया और उतना ही किया गया है। एक बात मैं और आपको कहनी चाहूंगा, जो मेरा इन सरकार के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और खास करके कोविड के टाइम पे, और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कोविड के टाइम पे बोल रहा था दिल खोल के आप थोड़ा सपोर्ट करिए। पर उस टाइम पे सरकार से मुझे मैसेज आया था कि अगर बुखार 102 है और 2 क्रॉसिंग की जरूरत है तो 2 ही दी जाएगी, 4 नहीं दी जाएगी। मैंने ये देखा है कोविड के टाइम भी, जितना दवाई की जरूरत है और जितनी नौबत है उतनी दी जाती है, क्योंकि हमारी चादर उतनी है, हम ज्यादा पैर पसार नहीं सकते हैं। वो एक चीज मैं आज तक देख रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, वो भी जरूरी है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो क्राउडिंग इन करता है, वो भी बढ़ाना है। साथ में मिडिल इनकम को थोड़ा राहत भी देनी है, साथ में कॉन्टिन्यूटी रखनी है एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स के लिए, पुअर पॉपुलेशन के लिए, वो भी हमने कायम रखना है। ये सारी चीजों का एक मेल जोल, बैलेंस्ड अप्रोच करके जो हो रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जो आप कह रहे थे ना अभी कि मार्केट क्यों नीचे गिर रही है, देखिए अगर टैक्स कलेक्शन देखेंगे, ये नहीं कि इनकम टैक्स एकदम क्रैश कर गया है। इनकम टैक्स में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट का आंकड़ा है 12,57,000 करोड़ का है, और वो बढ़कर 14,38,000 करोड़ तक आ रहा है। मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स में आप लुट रहे हैं, वैसी बात नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे मार्केट थोड़ा रेड में जा रही है, जैसे जैसे वो आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे वो देखेंगे कि बैलेंस्ड है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी तो अपनी बॉयंसी कर ही रहा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा कैसे हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि आंकड़ों में कुछ आर्टिफिशियल बॉयंसी डाली गई है? नहीं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ। आपने आज भी देखा है कि वॉलेंट्री टैक्सेशन के लिए स्कीम्स जारी कर दी गई है, और वॉलेंट्री टैक्सेशन के अंदर भी 2 साल के लिए और पिछले 5 साल का आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे याद है, स्पीच में मैं सुन रहा था 9 लाख के करीब लोगों ने उस वॉलेंट्री स्कीम का फायदा उठाया है। तो उससे भी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रही है, और उसका यह मतलब है कि जो टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था उसके ऊपर थोड़ा कर्टेल किया जा रहा है। उससे क्योंकि टैक्स बॉयंसी बढ़ रही है, आप ये सब कर पा रहे हैं।
Professor Agarwal, since we're talking about income tax exemptions and the relief that it provides to the middle class, let me also ask you a related question on the new income tax bill which the government intends to bring and which has been announced. Professor Agarwal, what is your sense? How is the bill going to look like? What is going to be its objective, if I may ask you, sir? With regard to income tax, it has been a great relief to the middle class because they have been asking this type of relief for last several years, although there have been some relief. But it has been my assessment, and it has been properly aired, that this time government is not going to provide a small benefit. They are going to provide a big shift in the income tax limit besides the new slabs. So already they are there. The purpose is there. Number one, everyone may ask that any budget is to please the public. Definitely it is for the political bosses to please the public, but more than that, there is economic sense in providing this great relief. Already the Indian economy is towards the buoyancy in terms of the growth momentum and in terms of investment. So what the government wants, that there is a private capital formation. It is there, and they are going to save, they are going to spend. Both activities are going to be enhanced. If they are going to save, this will lead to capital formation for fresh investment in the economy. Secondly, if they are going to spend, this will boost the demand in the economy, and Indian economy is now blessed because of its large population and because of the possibility of demographic dividend that Indian economy may benefit. So this may invite foreign investment also, because the foreign players are looking for a safe haven when there is a growth possibility. So Indian economy, in the current global perspective, it is only the Indian economy that has a very big market as well as big investment opportunity. So that's why this income, because Nirmala Sitharaman ji, when she was deliberating upon this, she was definitely articulating this type of approach, that this is not simply a relief to the middle class. Simultaneously, middle class may contribute through their spending, through their savings for the investment, and this will generate new growth momentum in the economy. So this is a great relief. Besides that, what is more, that there are two more things that should be linked again with the growth. One is in terms of rent earnings. There has been raising the limit from 2.4 lakhs to 6 lakhs. Secondly, there has been a raising in the income ceiling for the senior citizens for TDS. So both will lead to, in terms of the savings, capital formation, as well as expenditure. And where it will lead to expenditure by the things, it will generate investment in the real sector, and real sector generates employment in the unorganized sector. Besides, it generates demand at the masses level. So that's why I say that things will be better through this model. Professor Dash, a related question on the income tax bill, because it's something which is going to be announced next week, and the provisions, of course, we'll know in greater detail in the days to come. But how do you see it in continuity with the several reforms that the government has brought about over the last few years, which include faceless assessment, taxpayer charter? Also, there have been ways to facilitate ease in self-assessment. With this bill now coming about, do you think the ecosystem that the government is trying to build, wherein trust first and scrutinize later, that will in a way take shape and strengthen itself? I strongly agree, because what the economy survey yesterday emphasized, if you want to imagine an economy which is promoting market deregulation, self-regulation, so all these new mantras of success that the market economies have promoted over time, it's basically giving freedom to people. So what you emphasized is not a one-off reform that has happened. Over time, the Indian tax administration has learned that you cannot go with a carrot and stick approach.
you can only mop up higher tax revenue if the people are convinced that they are contributing to the development by paying taxes. So that has been the convincing factor in the last several budget speeches. In fact, Finance Minister herself has given 8 budgets. So over time, they have prepared people to take the responsibility to pay tax. And we have seen enough of digital technology applications in income tax simplification. So both have made it so easy for people. So that they realize that they are not burdened to pay tax. They feel that it's a responsibility to pay tax, and they are cooperating with the government. So what you said, that people voluntarily coming and paying, that is definitely happening. And more than that, the reforms that has happened in the simplification of the forms, the sufficient time to file the returns, and timely refund of the taxes. So all these have sort of prepared the new generation, actually the young mass, to take part in nation building exercise. So I see it as a overall paradigm shift. And you have to match with the economic survey ambition that we are making a smooth transition towards a deregulated economic system. I think there are a lot of stigma attached to deregulation, so it's better to say that more market-friendly economy. So if we say that, I think people are cooperating with that. And this ecosystem is one can say that we can prove as one of the leading emerging market if we can live with that sort of ecosystem and make people convinced to be part of that transition. जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अगर बात हम कर प्रबंधन की करें, जिस और प्रोफेसर चरण सिंह जी ने इशारा किया था कि जो कर प्रबंधन का बेहतर तरीके से पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उपयोग किया, जनता को प्रेरित किया कि अधिक से अधिक अपने इनकम टैक्स के लिए भरने के लिए आगे आए, और उसका दायरा बड़ा है और उसका परिणाम कर प्रबंधन के जरिए ही हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि भारत का जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है उसके खर्च करने की शक्ति बढ़े, इस ओर इशारा किया है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, सरकार ने उसके लिए प्रावधान किए हैं, साथ ही घरेलू खर्च में वृद्धि हो, इस पे भी सरकार का जोर रहा है। जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से सरकार की जो अर्थव्यवस्था को लेकर घोषणाएं रही हैं इस बजट में? बहुत सही प्रश्न आपने पूछे। जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बोले, ग्लोबल हब फॉर टॉयज, ये जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है, टर्मरिक बोर्ड कुछ दिन पहले बनाया गया है देश में, ये जो है ये एक फोकस्ड अप्रोच है। क्योंकि देश में अगर इनकम बढ़ेगा तब जाके पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और उसमें से इंडस्ट्री जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उनका इनकम बढ़ेगा। जब हमारा इनकम बढ़ेगा ही नहीं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं। तो इनकम बढ़ने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है, जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट मिशन बनाए हैं, एक एक्सपोर्ट मिशन बनाने के लिए जो अनाउंस किया गया है, उसी का सोच वही है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को हमने फोकस करके प्रमोट करें। क्योंकि देश हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी बड़ा है, इसके वजह से हम कभी कभी जो ग्लोबल क्राइसिस होता है उससे बच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्यात को ना बढ़ा दें। तो निर्यात के क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बनेगा, जो टॉयज के क्षेत्र में जो खादी सेक्टर्स है, जो अदर MSME सेक्टर्स है, उसमें जो फोकस गया है, उनका कुछ बुनियादी चैलेंजेस रहता था। क्रेडिट टाइम पे मिलता नहीं था, उनका मार्केटिंग में कोई असिस्टेंस नहीं हो पाता था। तो ये जो इकोसिस्टम कुछ मिसिंग था, जो उनको कनेक्ट नहीं कर पाता था ग्लोबल मार्केट के साथ। आप देखेंगे पिछले कई सालों से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिए गए हैं जो मार्केटिंग क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स में जो एक ओवरऑल चेंजेस लाए हैं, वो शायद हमारा देश का जो मध्यम वर्ग है उनको अवसर देता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये कुल मिला के जो एक माहौल बनाए हैं, ये अगर हम सस्टेन कर पाए तो ये एक अच्छा एक दिशा दिखाता है और एक ऑप्टिमिज्म
मतलब यंग मास को दे सकता है कि आप देश में कुछ अपना उद्यम कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन एक बजट है, 1 साल के लिए वो एलोकेशन होता है, आगे कैसे होगा ये सारा डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लागू करें और लोगों का इसमें भागीदारी कितने रहे और मार्केट कितना सपोर्ट करता है। जैसे प्रोफेसर सिंह बोल रहे थे, प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले ए वेरी बिग रोल इन दिस। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का पीपीपी स्कीम भी अनाउंस किए हैं। तो कुल मिला के इस सारे इशू को आप जोड़ के अगर देखेंगे तो कुछ है जो रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेगा, कुछ है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है, जैसे क्रेडिट वगैरह ये सब है, कुछ है जो प्रिपेयर करता है इकोनॉमी को आगे, जैसे यूथ एंड वुमेन स्टार्टअप के जरिए ये सब है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह हम सोच सकते हैं। Right. So we will talk about some of these reforms that you're indicating to. What are some of the measures that have been announced to enhance participation of the private sector, particularly in our growth story? At the same time, how have the other sectors gained, for example, the infrastructure sector, the financial sector? So the discussions with our guests is going to continue. But for now, we'll have to move to Rajya Sabha to witness the live proceedings in the upper house. Do stay tuned.